My name is Aditya. Today in our discussion we are going to cover the topic rule of strict liability and absolute liability. I bring this from Just Legal. So now let us starting with our discussion. So first of all, what is rule of strict liability? So दोस्तों हम रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी नाम से भी जानते हैं. इसका मतलब ये है दोस्तों, इवन दो अगर कोई डिफेंडेंट से अगर कोई गलती हो जाती है, इवन दो ही वाज नॉट नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट, बट स्टिल ही कैन बी मेड लाइबल इन ऑर्डर दैट देयर वाज अ सर्टेन हार्म वाज कॉज टू द प्लेंटिफ. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरह जाने तो ये वो कहता है, इवन इफ डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लिजेंट और नॉट इंटेंशनली कॉज द हार्म or he was careful, he could still be made liable for the harm caused to the plaintiff. So according to the rule of strict liability, even the innocent persons are held liable for harm caused to others on account of escape of things on their land. So हम ये वाला जो रूल है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, रेलेंट वर्सेस फ्लेचर, इससे डिराइव हुआ है. नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड सी व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ द रेलेंट वर्सेस फ्लेचर. सो दोस्तों ये रेलेंट वर्सेस फ्लेचर लैंडमार्क केस इसलिए है क्योंकि जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है दैट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड फ्रॉम दिस केस ओनली. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द केस. द फैक्ट्स ऑफ द केस वर एज सच दैट Rayland hired some independent contractors to construct a reservoir on his land. So while constructing, they dig a pit in the Fletcher's land and they joined the Fletcher's mine with the Rayland's reservoir. So when there was a sudden outburst of water from the reservoir, so the plaintiff's mine were impacted. Yeah, Fletcher's mine were impacted due to that. So there was a sudden burst and this led to the damage to the Fletcher on his land. So what was held in this case? इस केस में दोस्तों ये बोला गया, if a person brings on his land any dangerous things and keeps it there, and if such a thing escape, he will be answerable for the damage caused by its escape, even though he might have taken all the care to avoid such escape. He was not negligent in keeping it there. So even इसमें हमने देखा कि even though a person was not negligent on his part, but still he can be made strictly liable for the damage caused to the plaintiff if there was some escape of the dangerous thing. So thus the liability imposed is not because of the negligence or fault of the person, but it is because of the nature of thing which he kept on his land was so dangerous. तो इस रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें तीन बातें दोस्तों याद रखनी है, जिसमें सबसे पहली कि कोई एक डेंजरस थिंग होनी चाहिए, वो डेंजरस थिंग जो है एस्केप हो जानी चाहिए, और एस्केप होने की वजह से देयर वाज सम नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. नाउ मूविंग फर्दर विद आवर डिस्कशन, हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ डेंजरस थिंग? तो डेंजरस थिंग से दोस्तों हमारा मतलब है the nature of the thing is such that it can cause harm to others' property and such a damage could be suffered by the plaintiff. So in a nutshell, the nature dangerous thing means it is in a nature of the thing was so dangerous that if it escapes then it might cause harm to other person. The rule of dangerous thing जो है कोर्ट ने अलग अलग चीज़ों में अप्लाई किया है. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे गैस कि अगर देयर वाज सम लीकेज ऑफ द गैस तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया है या अदर कोर्ट्स ने अप्लाई किया है. इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑयल हो गया, नॉक्शियस फ्यूम्स हो गया, कोलेरली स्पॉइल हो गया, या रस्ट वायर फ्रॉम डिकेड फैंस हो गया. तो इन सब चीज़ों में हमने देखा है कि कोर्ट ने ये चीज़ जो डेंजरस थिंग को अप्लाई किया है. रूल ऑफ डेंजरस थिंग हैज़ बीन अप्लाइड इन दीज केसेस एज वेल. नाउ सेकेंडली हम बात करेंगे कि there shall be a escape of dangerous thing. So if there is no escape of the dangerous thing from the defendant's premises, so the rule of strict liability will not be attracted. However, if such dangerous things get escapes, then it will amount to be a strict liability. So escape means escape beyond the area outside the occupation and control of the defendant. So a person shall be liable only if the injury has been caused to the plaintiff in consequence of such escape.
नाउ थिर्डली, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. सो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड से दोस्तों हमारा मतलब है कि देयर वॉज सम स्पेशल यूज ऑफ द लैंड ब्रिंगिंग विद इट इंक्रीज डेंजर टू अदर्स एंड मस्ट नॉट मेयरली बाय ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंड और सच अ यूज ऑफ लैंड इज प्रॉपर फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. सो कोई ऐसी चीज़, अपनी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड से हमारा मतलब ये होगा कोई ऐसी चीज़ लाना जो कि जनरल पब्लिक एट द लार्ज यूज़ नहीं करती है और जिसके एस्केप होने से that might cause harm to the others. So however a non-natural use of land depends upon time and locality of each case. So there is no straitjacket formula to define what is a non-natural use of land. So हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब रूल ऑफ लाइबिलिटी के एक्सेप्शन क्या है. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के हम एक्सेप्शंस देखेंगे. सबसे पहला है कि प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट. इसका मतलब ये है ये जो है हमारी डॉक्ट्राइन जो है आपको याद हो, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया. सो वेयर द प्लेंटिफ हिमसेल्फ हैज गिवन कंसेंट टू डू समथिंग एंड इफ सर्टेन हार्म इज कॉज्ड ऑन दैट बेसिस, सो दैट वोंट अलाउ प्लेंटिफ टू ब्रिंग अ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. सो सबसे पहला हमारा ये है, कोई भी चीज़ अगर एस्केप हुई है जिसमें डिफेंडेंट की गलती है, प्लेंटिफ की गलती है सॉरी, तो वो जो है रूल ऑफ एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएगा और डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट डैमेज कॉज टू द प्लेंटिफ. नाउ सेकेंड हम देखेंगे कि कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अगर कोई डिफेंडेंट अगर कुछ काम कर रहा है which deals with dangerous thing and there has been some consent of the plaintiff, so still the defendant will not be held liable and he will be covered under the exception to the rule of strict liability. Now thirdly, that is act of God. So if there is some unnatural event that like flood, like earthquake, something like this happens and that causes the escape of such dangerous things from the defendant's premises, so that also will absolve the defendant from the liability under the strict liability, under the rule of strict liability. Now thirdly, कॉमन बेनिफिट. कॉमन बेनिफिट से इसका मतलब दोस्तों ये है कि द थिंग दैट वाज बॉट वाज फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट और द पब्लिक एट द लार्ज एंड इफ सच थिंग एस्केप इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ एनी अदर पर्सन, सो दैट वोंट ऑल्सो अट्रैक्ट द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड डिफेंडर विल बी कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर कॉमन बेनिफिट. नाउ फोर्थली, act of stranger. So there was some act of stranger which a person was not aware of. Supposedly अगर ए ने अपनी लैंड पे कुछ चीज़ स्टोर करी है और कोई अगर जानवर या कोई और चीज़ आके अगर उस पर कुछ अलग सा कर दे और उसको इन्फ्रिंज कर दे और ड्यू टू दैट एक्ट दैट थिंग्स एस्केप एंड एंटर्स इनटू द प्लेंटिफ्स प्रीमाइसेस, so that also won't amount defendant liable under the rule of strict liability. थर्डली, इट इज़ अ स्टैचुरी अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई भी काम ऐसा किया गया है अंडर दी स्टैचुरी अथॉरिटी या अदर किसी स्टैचू के तहत कि ये कुछ स्टोर करना या कुछ ऐसी चीज़ रखना ज़रूरी था और इफ़ दैट स्केप्स, so that will also not covered under the exception of the rule of that will also cover under the exception of the rule of strict liability. now अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम जानेंगे कि रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये है कि वेयर अ एंटरप्राइज इज एंगेज इन हजार्डस और डेंजरस एक्टिविटी and harm results to anyone on account of an accident, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any exception which operate under the Rayland versus Fletcher. So इसके तहत रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के तहत क्या है दोस्तों कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन एनी हैजार्डस और डेंजरस एक्टिविटी और वो चीज़ अगर कोई एस्केप हो जाए एंड दैट कॉजेज हार्म टू पब्लिक एट अ लार्ज, सो देयर नो मैटर द कॉस्ट और नो मैटर द सिचुएशन, द डिफेंडेंट विल बी मेड एब्सोल्यूटली लाइबल नो मैटर हाउएवर दे वर नेग्लिजेंट और नॉट. तो अभी हम आगे दोनों में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हम जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सो दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों कि देयर वाज, हमने देखा पीछे कि देयर वाज सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बट विच द डिफेंडेंट कैन take the plea that there was some plaintiff's own defense या consent of the plaintiff or act of God, so and so forth. But
under the rule of absolute liability there are no exceptions as such, and a defendant is made absolutely liable in order to compensate the harm caused to the plaintiffs at a large. So the rule of strict liability दोस्तों ये हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाले केस से प्रोपाउंड हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स में से है. इसको हम ओलियम गैस लीक भी बोलते हैं. तो इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे दोस्तों कि ऑन 4th और 6th December देयर वाज अ लीकेज ऑफ द ओलियम गैस फ्रॉम द श्री राम फर्टिलाइजर्स यूनिट. So due to which the leakage, many people died due to hazardous effect of this gas. So the action was brought by PIL under Article 32 of the Constitution, through which the court propounded the doctrine of the absolute liability. So according to absolute liability, Supreme Court expressly declared that absolute liability was not subject to any of the exception under the rule in the Rayland versus Fletcher. So in order to make the person liable, the Supreme Court justified that a person, if an enterprise is engaged in some activity which deals with some hazardous substance, so it will be absolutely liable to compensate. So the reasons for which the such ruling was given. The first was that the enterprising carrying on such hazardous activity for private profit has a social obligation to compensate those sufferings and absorb any losses as an item of overhead. So basically कि अगर कोई भी organization या कोई भी enterprise which is dealing in hazardous activity for private profit, it has a social obligation in order to compensate the losses accrued through that. Secondly, the enterprise which is dealing in hazardous substances alone has the resources to discover and guard against such hazard and danger. So on that basis, Supreme Court made the propounded the rule of absolute liability and made the defendants liable no matter the cost of that crime. So let us move forward. Now I am giving you some practice question. Kindly practice and send it to us. No fault liability has undergone a drastic change in the recent past. Comment. Second question, what are the exceptions to the rule of strict liability? Briefly examine each one of them. So you can mark this, you can write these answers and you can send us to the email ID mentioned in the description box below. So थैंक यू दोस्तों, ये था हमारी तरफ से रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का. तो आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक, press the bell icon and subscribe the Just Legal for never missing an update from the Just Legal.